what I was saying is that, um, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So what I was saying is that there is an equivalent bending force. Um, and so my question is, if we have a rope that is made up of wires like this, what will be the diameter of this, or what will be the area of this rope? And let's say that we have made our effort to make it round and the diameter of this rope is d. So what's going to be the area? This is going to be something like this, ऐसे नजर आएगा ना, right? It's going to look somewhat like this. ठीक Yes, है जी? sir. So what's going to be the area, the cross-sectional area? Let's say if I take a section, what is going to be the area of this, if this section? Pi by 4 d square. Okay, pi by 4 d square. And this d will be the diameter of Excuse me, sir. g. सर वाई के एरिया को ऐड नहीं करेंगे सर ये ऑल वायर्स के एरिया. Okay, so that person said that it is going to be pi by 4 d square, where d is the diameter of the rope, but Sir, D the diameter of the wire or multiply by हम number of ये okay, threads है so कि what we mean is that if I want to have the exact area of this, of the effective area, बल्कि इसको कह दूं, effective area क्या होगा if it is taking the load, तो if we look at the in between these wires, there is gap. For example, यहाँ पे अगर आप देखें तो there is gap, right? uh, यस सर. so that gap is not going to give strength to the rope, right? So this is not the area of the rope. सर This हम is ये not. number of हाँ, ये तो count हम करेंगे. effective area लेंगे, which will be AM. And why do we call this AM? This is the area of the metal. इसलिए हम इसको AM कह रहे हैं, ठीक है जी. So that is why my FB is equal to sigma times AM. ठीक है जी. और उसको फिर फर्दर हमने जो मतलब जो AM है, वी हैव एक्सप्लेन दैट कि वो किस चीज़ के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ER dWAM ओवर D हमारे पास होगा, ठीक है जी. And this is known as the equivalent bending load. The wire rope tension giving the same tensile stress as shoe bending is called the equivalent bending load. Now, how, जैसे अभी मैंने कहा कि if there is bending, that bending is going to reduce the strength of your rope. ठीक है जी. And what is that reduction in the strength of the rope? It depends on the rope. ठीक है जी. एक दो चीजों पे डिपेंड, rope उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द रोप, द डायमीटर ऑफ द शू एंड द डायमीटर ऑफ द रोप, कि वो किस तरह है. तो इफ यू लुक एट दिस फिगर, देखें, दिस फिगर गिव्स यू परसेंट स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू डिफरेंट डी बाई डी रेशोज derived from standard test data for 6 by 19 and 6 by 17 class ropes. तो ये आपको बता रहा है कि देखिए, अगर आपके पास डी बाई डी रेशो यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5, so this is 2 4 6 8 and 10. So if the d by d ratio is 2, then your percent loss in the strength, the bending strength of this rope is too much. देखिए कितना reduce हो गया? By how much? It is almost 35 से ऊपर 37. है, 37%.
ठीक है जी। लेकिन जितना आपका डी बाई डी रेशो, इसका मतलब है कि जितना डायामीटर बड़ा होगा ना, बड़ा होता जाएगा। तो व्हाट विल हैपन कि आपका ये रेशो जो है ना, देखें 20, 30, 40, सो यू हैव लेस एंड लेस बेंडिंग इन हियर। ठीक है जी। तो दिस मीन्स के जितना आप नीचे आएंगे, यू विल हैव, इट विल बिकम फ्लैट एंड द लॉस इज ऑलमोस्ट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तकरीबन 5%. 5. So this will Yes, sir. reduce to that. ठीक है जी। Now, if you look over here, this table gives you the factor of safety for wire rope. Now, these are the different applications for wire ropes. Okay? अगर आप यहाँ पे देखें तो basically these are the applications for wire ropes. देखिए माइन शाफ्ट्स, hoisting के लिए, haulage, cranes, electric hoist, etc. If you look over here, passenger elevators, um, freight elevators. अच्छा जी, looking at this table, what is the maximum? Now, this is the factor of safety. ठीक है जी, ये column आपको क्या दे रहा है? This column gives you the factor of safety. Now, what is the maximum factor of safety that you see over here? कितना दिखाई दे रहा है? 11.90. 11.90. So basically what we are saying is okay, the factor of safety um, over here is this is the maximum in this table. ठीक है जी, ये हमें maximum factor of safety दे रहा है. What is the minimum factor of safety that you see in this table? 3.2. 3.2. 2. So this is the minimum that you see in this table. Now, looking at these values, and till now, the factor of safeties that we have used, ठीक है जी, just compare these to those. हम, what should be the factor of safety for design in general? It should be, 1 point greater than 1. 5. it should be more than one. ठीक है जी। हमने अभी तक ये कहा है कि your factor of safety should be more than one. ठीक है जी। Let's say 2, even 1.5 को भी हमने कहा है this is satisfactory. लेकिन in the case of ropes, the factor of safety is really high. यानी ये देखें, ये ट्रेक केबल्स के लिए वी आर टेकिंग दिस 3.2, which is a very high factor of safety in general. ठीक है जी। अच्छा, and if you look at the other, on the other hand, this is almost 12. ठीक है जी। so your factor of safety is 12 over here. Now what does this mean? Why are we using 12 factor of safety? Because this is a passenger elevator. ठीक है जी। Since, देखिए, if a lift or an elevator falls, what will happen? What is going to happen? Loss of life. Loss of life. बहुत So looking बस at the damage and the loss of life, um, this is very, you know, common that we take, and people might ask you this in your interviews, in your vivas, that what is the factor of safety and the minimum factor of safety for a passenger elevator. So the minimum factor of safety that we take for a passenger elevator is around 8. 8 से लेके about 8 से लेके 12 तक हम लेते हैं। ठीक है जी। अगर आप देखें यहाँ पे तो दिस इज 7.60, एंड यहाँ पे आप देखें तो दिस इज 12. तो 8 से लेके 12 तक हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं। मतलब वी टेक वेरी मच प्रिकॉशन कि हमारा जो जो एलिवेटर है दैट इज सेफ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं बियरिंग स्ट्रेस के ऊपर। नाउ व्हाट विल बी द बियरिंग स्ट्रेस या बियरिंग प्रेशर? देखें, we just said if we have a shoe and there is a rope that is going around it,
ठीक है जी, and let's say this is F load over here. So what is the bearing stress? देखिए stress is always equal to F by A. ठीक है जी, F by A के बराबर होता है. Now what is the bearing area over here? हमारे पास bearing area क्या होगा? Please, what is the bearing area? It will be Sir, the the contact area of the Circle. it will be the dam projected area. or sheave. देखिए वो हम क्या काउंट करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया काउंट करते हैं. प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? देखिए इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक. ये आपका शू है, ठीक है जी, एंड देयर इज दिस रोप सिटिंग ऑन इट. तो इस रोप का कोई डायामीटर है ना, डी, ठीक है जी, और इसका जो डायामीटर है दैट इज कैपिटल डी फॉर एग्जांपल, and the rope diameter is small d. ठीक है जी. तो what is the projected area? Projected area ये होगा ना, देखिए यहाँ पे ऐसे होगा ना, if the rope is sitting over here, so this is the projected area. ये where this dimension is d and this dimension is capital D. So हमारा जो projected area है that is d times d. ठीक है जी. Now your sigma जो है सिग्मा आपके पास किस चीज के बराबर होगा? सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट? F by DD. एफ बाय 2f बाय डी डी. ठीक है जी, एफ बाय डी टाइम्स डी. ठीक है जी. तो इसको आप प्रेशर कहें या स्ट्रेस कहें, दे बोथ आर द सेम. पी या सिग्मा, this equation will give you um, the bearing pressure. ठीक है जी, the bearing pressure or the bearing stress. And if you look at this table, this gives you the maximum allowable bearing pressures in PSI. For example, यहाँ पे आप देखें rope. So this is a regular lay rope, 6 by 7, 6 by 19, 6 by 37, and so on. And it give, you know, it depends कि आपका जो है material क्या है. If it is wood, ठीक है जी, that is 150. For cast iron it is 300 and so on. ठीक है. So these are the values of the maximum allowable bearing pressure. So when you design it, this is what you are going to look at कि अगर इससे बढ़ रहा है then your design is not going to work. ठीक है जी, you will consider this bearing. Similarly, laying lay के लिए again you have these values over here in this table. Please do not forget to read the footnote with all these tables. ठीक है जी. अच्छा, सिमिलरली देखें यहाँ पे अगर आप देखें फटीग. अच्छा, फटीग में फटीग रिलेशन बिटवीन लाइफ ऑफ वायर रोप एंड शू प्रेशर. देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक पैरामीटर है जिसको हम प्रेशर टू स्ट्रेंथ रेशो कह रहे हैं, विच इज 1000 P over SU. ठीक है जी. What is SU? SU बताइए. Ultimate strength. Ultimate ठीक है, strength. ultimate strength. Ultimate. ठीक है जी. Now these are curves for different wire ropes. Okay, 6 by 37, 6 by 24, 6 by 19, 6 by 12. And what does this give you? This basically you just the endurance या हम उसकी number of bends to failure. तो this is due to fatigue loading अगर हम करें तो these are the number of bends to failure and this is for ropes only. अगर आप देखें तो what do we have के figure 17-21 है ये. This does not preclude failure by fatigue or wear. ठीक है जी. It does show long life if आपका जो P by SU का रेशो जो है ना, ये अगर 0.001 हो जाए तो it is a long life. Now if you take
substituting this ratio in equation 17-4 2 में अगर आप डालें, ठीक है जी, तो what will happen is कि आपका जो जो let's see SU है, that is going to be 2000 F over D. Now, dividing both sides of this equation 17-4 2 by SU, and if you solve for F, so it will give you F equal to P over SU D over 2 आपको दे देगा, ठीक है जी. And now you can calculate the factor of safety in fatigue. What will be the factor of safety in fatigue? देखें, आपने इस FF से वो जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस है वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय FT, which is the stress, the what should be FT? FT was saying the allowable total load. जी allowable लोड या No, sir. allowable टेंशन, ठीक है जी, allowable टेंशन होगा, ठीक है जी. तो यू कैन कैलकुलेट इट दैट वे. अच्छा जी, रिमेंबर दैट इन रोप्स दो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन लोग इस तरह भी कैलकुलेट करते हैं कि NF इज इक्वल टू जस्ट FF ओवर FT. हाँ, दे डू नॉट टेक दिस अवे, ठीक है जी. और इसी तरह अब बेंडिंग में भी आपके पास मतलब जो बेंडिंग लोड है वो भी मतलब एफ बेंडिंग माइनस एफ बेंडिंग और एफ टी या एफ यू अल्टीमेट अगर आप मालूम करना चाहें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो दैट विल बी एफ यू ओवर एफ टी आपके पास होगा. तो and sometimes you calculate it this way, so both of these are used. लेकिन अगर आप उससे माइनस एफ बी लेंगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू हायर सेफ्टी फैक्टर, मतलब हायर सेफ्टी होगी, फैक्टर तो कम नजर आएगा लेकिन इट विल गिव यू अ हायर फैक्टर, ठीक है जी. नाउ टिपिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल वायर्स, वो जो मटेरियल टेबल में दोज वर डिफाइंड for those materials, अगर आप देखें तो these are the properties of those materials कि आपके पास the improved plow steel 240 से लेके 280 तक, इसके दरमियान SU for all these is या ultimate strength जो है वो डिफाइन किया गया है, ठीक है जी. सर्विस लाइफ कर्व बेस्ड ऑन बेंडिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेस, हैव अ लुक एट दिस, ठीक है जी. रिलेटिव सर्विस लाइफ आपको दे रहा है. सम वायर रोप्स प्रॉपर्टीज, अगेन दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द वायर्स, वेट कितना है, मिनिमम शीव, बेटर शीव डायामीटर एंड सो ऑन. अच्छा, वन मोर थिंग देखें, व्हेन यू कैलकुलेट, जैसे अभी हम डायरेक्ट शेयर की बात कर रहे थे, ठीक है जी, सिग्मा इज इक्वल टू F बाई A होगा. नाउ व्हाट शुड दिस F इंक्लूड? आपके पास इस F में क्या होगा? Let's say I have a rope, ठीक है जी, और इस रोप से मैं कोई चीज जो है बांधी हुई है W, राइट, या एलिवेटर है लेट्स से, एंड दिस इज या इसको मैं इस ड्रम से, चले ये भी छोड़ दें, I'll just leave this away, ठीक है जी. I am just going to wind this over this shoe. So what is the load on this rope? Can someone tell me the components? G ropes are always in tension, sir. Yes, so this is the intention, ठीक है जी. Now, but what are the loads? When I design this, what are the loads that I should consider? Number one, चलिए जी बताएं जी. Bending load. weight be जी considered. जी. Weight, weight sir. of the elevator and weight of तो people. डेड वेट इस तरह करूं, dead weight is the weight of this elevator, and if there are people, material, whatever in there, वो include हो जाएंगे. The second one should be
the weight of the rope itself, and rope is also very heavy, हाँ, इसका भी वेट होगा ना कि नहीं? Yes, sir. रोप का वेट होगा? नेग्लिजिबल Yes, नहीं sir. होते सर? नहीं, इट्स नॉट नेग्लिजिबल। कैन यू पिक अप अ रोप? आपने कभी रोप को हाथ डाला है? You pick it up, it's very Sarji heavy. It's really heavy. Rob Duruni Sarji خلق بيتك awar me chunam kai kana. څنګه؟ Rob हो Sarji ډیر درونی هغه خلق په देव ټک देव awar me chunam हाँ, kai. ओके। एंड व्हाट विल बी द थर्ड? देखिए, द थर्ड वेट जो आप लेंगे ना, दैट विल बी द लोड, द इनर्शियल लोड मैं कह देता हूं। देखिए, let's say if this is an elevator and it becomes to a sudden stop, yeah, sudden motion, sudden movement, so this is going to cause some impact on the rope, ठीक है जी? तो वो लोड भी मैं लूंगा। तो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, देखें ये इक्वेशन आपको क्या दे रहा है? एफ टी, ठीक है जी? Now this will be the total load which will be W over M, ठीक है जी, प्लस स्मॉल w इंटू एल। दिस इज मतलब दिस इज द डेड वेट, जो भी है, एलिवेटर की आप कह रहे हैं बात, या पीपल या मटेरियल। और ये जो है ना, दिस इज w इज द वेट ऑफ द रोप पर फुट या पर यूनिट लेंथ। तो आपने इसको एल से मल्टीप्लाई किया, तो एक तो ये होगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि देखिए 1 प्लस ए ओवर जी, दिस इज द इनर्शियल कंपोनेंट। देखिए, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो व्हाट इज इट गोइंग टू गिव मी कि एफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम plus that shall multiply कहीं without this and multiply then it's going to be multiplied over here। तो एक तो इसका डेड वेट प्लस w over m times a over g, this is the inertial component of the dead load, ठीक है जी? plus the inertial component of plus the weight of the, चलिए मैं लिख देता हूं, w over m plus w over m times a over g. This is the inertial component of the dead load plus wl, ठीक है जी, plus wl a over g. दिस इज द इनर्शियल कंपोनेंट ऑफ दैट। तो ये सारे लोड्स आपने लेने होंगे इसमें, ठीक है जी? वेट एट द एंड ऑफ द रोप, केज लोड जो भी है, m इज द नंबर ऑफ वायर रोप्स, नंबर ऑफ वायर रोप्स सपोर्टिंग द लोड। अगर आपके पास जितने भी आपके पास वायर रोप्स हैं उस पे डिवाइड होगा ना। अगर इफ यू आर यूजिंग 2 रोप्स सो दैट विल बी w/2, इफ यू आर यूजिंग 1 दैट विल बी 1, ठीक है जी? W is the weight per foot and L is the suspended, A is the maximum acceleration, or G is the acceleration due to gravity. So that is how you are going to calculate the total load, ठीक है जी? um, for a for a mine hoist, mine जिससे हम माइन से मिनरल्स निकालते हैं ना, माइंस से, तो your FB is equal to ER DW or AM over D, we already talked about this। अच्छा, ये वही फैक्टर ऑफ सेफ्टीज है जो जिसकी हम बात कर रहे थे। और आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रोप्स के लिए इट शुड बी अबाउट अराउंड 3 होनी चाहिए, ठीक है जी? तो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि FU माइनस FB और FT, FF माइनस FB और T। और मैंने आपको ये भी कहा कि समटाइम्स people will use only this equation for calculating this, वो b नहीं निकालते इससे, ठीक है जी? but this is going to add more safety, ठीक है जी? अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो it says that given a 6/19 monitor steel जिसके लिए ultimate strength जो है that is 240 kpsi wire rope, develop an expression for rope tension FT। तो आपने क्या करना है कि you are going to find an equation for FT, fatigue tension FF, equivalent bending tension FB, जो अभी हमने निकाले हैं, ठीक है जी? एंड fatigue factor of safety NF,
for a 531.5 feet 1 ton cage. So this is the weight of the cage, and load mine hoist with a starting acceleration. तो आपको A दिया गया है, right, as depicted in figure this. The shoe diameter is 72, तो आपको D दिया गया है, right, 72. Using the expression developed in part A, examining the variation of in factor of safety, NF for various wire ropes. So this is just a straightforward one. You will have W over M plus WL, ठीक है जी, 1 plus A over G, यही इक्वेशन आपके पास आएगा. अगर आप देखें तो रोप टेंशन जो है दैट इज एफ टी इज इक्वल टू दिस. तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर्स, चूंकि वी डोंट हैव दिस, ठीक है जी, एंड द नंबर ऑफ वायर्स, तो आपके पास एम एंड डी आ जाएगा. वो आपको कह रहा है कि लुक एट इट फॉर डिफरेंट वायर डायमीटर्स, तो वो आप देखेंगे. अदरवाइज आपके पास एफ एफ जो है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ डी, and FB will be in terms of D2. ठीक है जी. तो go ahead and look at the factor of safeties and then use different diameters. तो ये टेबल जो है ना, अगर आप factor of safety निकाल रहे हैं for number of ropes, if you use 1 number of rope, 2 number or 3 number of ropes, these are the results that you are going to get. समझ में आ गई बात? और सर ये डाया हम अपने आप से ले रहे 0.25 Yes, 0.375. standard डाया जो tables में available है, you will just pick any of these. ठीक है जी. And you go to the table. ओके सर. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, what did we do? He says that develop an equation. ठीक है जी. तो we developed an equation by looking at this, and we already wrote that equation, W over M, ठीक है जी, plus WL times 1 plus A over G. You are just using this equation, but since we do not have D yet, तो हम उसको D डाल देते हैं, and we don't have M yet कि कितने नंबर, तो उसको हम बाद में बस उसी उन equations में डाल के we are just calculating it. That's it, nothing else. ठीक है जी. ओके सर. अच्छा, this is another example. अच्छा जी. Also हमारे पास I'm just going to touch this कि flexible shafts होते हैं. Flexible shafts are not like the ones that we have, they are rigid. And this shaft is a rigid shaft. Has anybody seen a speedometer cable? किसी ने देखा? यस सर दैट मोटरसाइकिल इज अ वाले. फ्लेक्सिबल शाफ्ट. ठीक है जी. और अगर आप इसको देखें तो इसका हेड्स जो है वो इस तरह से मुख्तलिफ हेड्स बने हुए होते हैं. एंड इफ यू लुक एट अ फ्लेक्सिबल शाफ्ट, दिस इज हाउ इट इज मेड. देयर इज अ मैंड्रिल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रोप. ये मैंड्रिल, ठीक है जी. देन देयर इज वन लेयर ऑफ वायर्स, then there is another layer of wires over that, another layer of wires over that, another layer of wire over that, and then there are many layers. And what you do is you take this and put it inside an a kind of tube like thing. ठीक है जी. अब देखें, आप इसको रोटेट करते हैं ना, इस साइड इसको आप रोटेट करते हैं, सॉरी disappears. तो what will सर ये happen? कंटिन्यूस लेयर्स ऑफ वायर्स होते हैं या जी, सेगमेंट्स होते हैं? सर ये जो लेयर्स नहीं सर, ये कंटिन्यूस लेयर्स होते कंटिन्यूस, हैं ये या? यहाँ तक कंटिन्यूस यहाँ तक होंगे, इस तरह होगा. ओके सर, ओके थैंक. If you look at it's not going to look like this. It's just for demonstration purposes. तो ये आपके जो फॉर एग्जांपल फ्रॉम द व्हील, आप इसको इसको व्हील के साथ अटैच करते हैं, जो आपके स्पीडोमीटर का जो शाफ्ट होता है, एंड यू टेक इट अलोंग डिफरेंट पाथ्स एंड ब्रिंग इट टू योर स्विच बोर्ड इन हियर. देखें, it will cross these corners and it is still going to transmit power because it's flexible.
ठीक है जी। तो इस हद तक हम फ्लेक्सिबल शाफ्ट की बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट यू नो ये जो and I advise you to look at the speedometer cable of इसको हम why do we enclose this in this enclosure? Because we don't want dirt to get in there. बल्कि कुछ अरसे बाद it might just wear and tear, and if the wires become like these, ये जो आपके wires है ना, if they become like these, it's going to not work. It will cease to work. ठीक है जी। तो that was all